Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to lecture number 7 for Global Business Management. And today we're ethics with reference to international global business. So let's jump into the topic. What is our understanding by ethics? This is basically accepted principles of right and wrong, which governs the conduct of a person. That is the member of a profession or the interaction of an organization. So business ethics क्या होंगे? Are the accepted principles of right or wrong which governs the conduct of a business. People एक जो लोग हैं वो collective purpose के लिए इकट्ठे हुए हैं. What is their understanding? जो organization उनको dictate करेगा what is wrong, what is right with reference to that organization's goal achievement. To establish and communicate those organizational business ethics, we have to develop an ethical strategy, and that is a course of action that does not violate those accepted principles within the range of that organization जहाँ के आप workforce का आप हिस्सा हो. So let's try to identify what are the common issues in international business with reference to ethical practices. That is employment के practices हो सकते हैं. आप sweatshops तो नहीं run कर रहे, आप gender की base पे discrimination तो नहीं कर रहे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में harassment के cases तो नहीं है, आप whistleblower को protect कर रहे हो या नहीं कर रहे. So these are the employment practices. आप gender, caste, creed, ethnic background की base पे discriminate तो नहीं कर रहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. और अगर आप इंश्योर कर रहे हो कि ऐसी कोई प्रैक्टिस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, तो आपने कौन सी गाइडलाइंस सेट आउट की हैं जिनको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हो. देन ह्यूमन राइट्स का इशू है. विद इन द वर्कफोर्स क्या आप अलाउ करते हो कि डिफरेंट lobbies बन सकें, different associations बन सकें. And then we have to cater the need for environmental regulations कि जो workforce environment safety है उसको आप protect करो, या जिस जगह पे आपके workforce production offices हैं वहाँ के जो लोकल रेगुलेशंस या गाइडलाइंस हैं उनको आपको फॉलो करना होता है. एक और अदर जो है मॉनेटरी करप्शन तो वेरी अंडरस्टैंडेबल है, बट अदर देन मॉनेटरी करप्शन देयर आर और बड़ी क्लासिफिकेशन है करप्शन की जिनको हम आइडेंटिफाई करना होता है, जिनको हमने रेक्टिफाई करना होता है. एंड लास्टली मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है. जब हम मोरल की बात करते हैं तो दिस इज नॉट समवट लीगली बाउंडिंग इम्प्लीकेशंस, बट रादर ये अपने ओन पे ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए डिफाइन करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ society in general and the welfare of its workforce in specific. So let's talk about employment practices. अब employment practices को distinguish करने के लिए आपको देखना होगा कि let's say एक international का firm है, पाकिस्तानी firm है जिसके business operations किसी यूरोपियन कंट्री में है. तो दोनों ममालिक पाकिस्तान और यूरोपियन कंट्री इन क्वेश्चन दोनों के एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं. दोनों ममालिक के कवानीन मुख्तलिफ होंगे, दोनों की बिजनेस प्रैक्टिसेस मुख्तलिफ होंगी दोनों ममालिक की. सो यू बीइंग द कंट्री कंपनी इन क्वेश्चन यू हैव टू सिलेक्ट कि आपने किस जगह के कवानीन अप्लाई करने हैं. अगर आप पाकिस्तानी फर्म है तो आप ये नहीं कर सकते कि यूरोपियन मुल्क में जाके पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी कवानीन और पाकिस्तानी बिजनेस प्रैक्टिसेस को वहाँ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, एंड वाइस वर्सा. सो इधर यू हैव टू go for Pakistani business practices or the European country जहाँ पे आप अपना business लेके जा रहे हो. तो ये दो extremes हैं, या इन दोनों के दरम्यान कोई एक middle way है जिसको आप ब्रिज कर सकते हो कि आप कुछ कल्चर प्रैक्टिसेस अपने मुल्क के ले जाएं एंड मेजॉरिटी वहाँ की फॉलो कर रहे हैं, एंड वाइस वर्सा. ये सारा कुछ देखने की ज़रूरत है. So let's talk about human rights क्या हैं जी. Granted, these are the basic fundamental rights which are granted in developed nations. जिसके अंदर freedom of association है. You should not discourage your workforce या अपने employees को आप bound नहीं कर सकते कि आप associate ना करें with certain individuals, certain thought processes, with certain philosophies. अगर आप ये करेंगे तो आप उसके बेसिक जो राइट है उसके वायलेशन कर रहे होंगे. देन दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच
कि जो उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं, जो उनके नाइटमेयर्स हैं, उनको डिस्कस किया जाए, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए. दैन फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड सो ऑन, और नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. ऑल्दो डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये किसी हद तक ग्रांटेड है, लेकिन अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग नेशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो बेसिक राइट्स हैं इनको नहीं प्रैक्टिस किया जाता. एंड अदर एस्पेक्ट जिस पे हमें बात करनी चाहिए दैट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. एंड उसके अंदर अगर आपके मुल्क में जहाँ पे बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अगर वहाँ पे एनवायरमेंट रिलेटेड गवर्निंग बॉडीज जो कवानीन है, जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनको लेटर एंड स्पिरिट में अप्लाई नहीं करते तो उस वक्त में आपको क्या करना पड़ेगा. व्हेन एनवायरमेंटल रेगुलेशंस इन होस्ट नेशंस आर far inferior to those in the home nation, ethical issues arise. And the tragedy of the commons is when a resource held in common by all but owned by none is overused by individuals, resulting in its degradation. अब ये जो natural elements हैं, like was water, clean air, then we have mineral deposits, marine life, प्लांटेशन या फॉरेस्ट हैं, ये हम सारे बनी नौ इंसान इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं, बट ये नेचर की प्रॉपर्टी है. दिस इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स और कंट्रीज. तो लेकिन अगर इसको हम मिस यूज़ कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, तो उसकी रिप्रिकॉशंस हम ये नहीं कह सकते कि सिंस हम मिस यूज़ नहीं कर रहे तो इसलिए इसको कोई भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा. नो सर, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द केस. आपसे एक छोटी सी एग्जांपल शेयर कर देता हूँ जस्ट टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग. जो अपर पंजाब है विच इज़ इन इंडिया, वहाँ पे जैसे ये मौसम आएगा राइट नाउ, तो दे विल स्टार्ट बर्निंग द हस्क ऑफ राइस एंड वीट. वो एयर फ्लो के साथ आपको पंजाब लाहौर में आ जाता है, तो आप उसको बाउंड्री, जो कुदरत है, नेचर है, वो बाउंड्रीज को नहीं मानती. ऑल्दो हमारे यहाँ पे ही जलाया जाता है, लेकिन हमसे पहले वहाँ पे होता है, तो वो सारा जो स्मोक है जो लाहौर फेस करता है, थैंक्स टू इट, कि वो एयर फ्लो है दैट इज टूवर्ड फ्रॉम अपर पंजाब टू लो पंजाब, तो उसकी डायरेक्शन हमारी तरफ है, तो वहाँ पे आग लगती है, वो घूम के हमारी तरफ आया, तो दैट रिजल्ट्स इन स्मोक. और अभी आप देखोगे कि अगले महीने में फिर हमें वो सामने नजर आना शुरू हो जाएगा कि एयर क्वालिटी कितनी पोल्यूटेड है. Another factor जो हमें देखना है, that is corruption, and that is in United States the Foreign Corrupt Practices Act outlaw the practice of paying bribes to foreign government officials in order to gain business. आप इसको परसेंटेज कह लें, किकबैक कह लें, ऑनरेरियम कह लें, जो नाम दे दें, अगर कोई एक इंडिविजुअल अपनी ऑफिशियल पोस्ट के इन्फ्लुएंस की बेस पे आपसे पैसे, मॉनेटरी बेनिफिट सीक आउट कर रहा है, तो वो करप्शन की कैटेगरी में आएगा. सो कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग ब्राइबरी ऑफ फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स इन इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस adopted by the Organization for Economic Cooperation and Development obliges member states to make the bribery of foreign officials a criminal offense होनी चाहिए. Excuse me. Some economists suggest that the practice of giving bribes might be the price that must be paid to do a greater good. Again, this is debatable. एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अनलेस एंड अनटिल इसको वो मोबिलाइजेशन मनी डिक्लेयर करते हैं, कि या हमारी ज़ुबान में कहें तो फाइलों को पहिया लगाना, कि ब्यूरोक्रेसी की जो लैडर है वहाँ से अगर आपने परमिशंस लेटर्स लेने हैं, एनओसीज लेने हैं, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. तो इफ़ यू वांट टू फास्ट फॉरवर्ड इट, तो आप मोबिलाइजिंग मनी इन टर्म्स ऑफ, जिसको रिश्वत भी कहेंगे, अब वो दे दें तो ये आपको एक ओवरऑल गुड देता है, बट दिस इज़ नॉट जस्टिफाइबल. In countries where pre-existing political structures distort or limit the working of market mechanism, corruption in the form of black marketing, smuggling, and side payments to government bureaucrats to speed up approval for business investments may actually enhance welfare. However, other economists have argued that corruption reduces the returns on business investment and leads to low economic growth. Yes, this is more acceptable interpretation of corruption, जो उसके negative impacts हैं, कि अगर एक undue favor मैं आपसे मांग रहा हूँ by utilizing the power of my official position which I hold,
तो वो अनड्यू जस्टिस है, जो आप शायद एक लीगल काम कराने के लिए मुझे ब्लैक मनी दे रहे हो या ब्राइब कर रहे हो, तो दिस इज क्रिमिनल ऑफेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉरल ऑब्लिगेशंस। मैंने आपसे पहले कहा था कि ये जो मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, इस पे वो आपको लीगल बॉन्डिंग नहीं है एज ए ऑर्गेनाइजेशन, बट ये आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो कि जिस मुल्क जिस माशरे में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो उसकी जिम्मेदारी है, वहाँ का मैं एक कॉर्पोरेट सिटीजन हूँ, सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि सेफ्टी हो, वहाँ की उसकी वेलफेयर की बात करूँ। द आइडिया दैट बिजनेस पीपल शुड टेक द सोशल consequences of economic actions into account when making business decisions, and that there should be a presumption in favor of decisions that have both good economic and good social consequences for the society in general. Now, let's talk about dilemma first, and then we will try to understand what we mean by ethical dilemma. Dilemma is where you have multiple options, or at least two options, which can either way solve the problem you're facing at hand. तो अब डिलेमा है कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों के ऑप्शंस के साथ एसोसिएटेड होंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ अ पिकल, बेसिकली यू हैव टू पिक द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन जिसके कॉन्सिक्वेंसेस कम से कम हो और जिसके बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो, और ग्रेटर गुड शुड बी द इंटेंशन। So ethical dilemma: situations in which none of the available alternatives seems ethically acceptable. They exist because real world decisions are complex, difficult to understand and comprehend, and involve the various consequences that are difficult to quantify. So let's try to identify what are the basic root causes of unethical behaviors of government employees, workforce, the labor unions you have. Let's try to understand it. Factors क्या हैं जी? Manager, why at sometimes behave unethically? Personal ethics of that individual or person in managerial capacity. Decision making process क्या है उस organization का? Immediate gratification की effort की जाती है, appreciation के लिए किया जाता है, या स्किन सेविंग के लिए किए जाते हैं जो डिसीजंस हैं, और या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है कि आप एप्पल ऑफ आइज को इनकरेज करते हो या जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको आप अप्रिशिएट करते हो, या आपके ऊपर इतने अनरियलिस्टिक टारगेट्स डाल दिए जाएं जिनको आपने अचीव करना है, एंड या ये अनएथिकल बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ practiced by top leadership of your organization. अगर वो morally corrupt है and they are the one who are encouraging you to go for unethical practices, तो of course आपको मजबूर करेगा unethical behavior की तरफ। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को रोक रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी हमारे इंटरेक्टिव सेशन में। टिल देन अल्लाह हाफिज and see you people in interactive session.